Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear colleagues, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I'm really thankful to our honorable guest, Professor Dr. Irfan, for sparing time and enlighten us about his thought about the format learning methodologies. So to formally start the proceeding, I request Khalid Ibrahim Saab to recite few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. بے شک سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے. جزاک اللہ.
Dr. Irfan did his PhD in mechanical engineering from Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA in 1998. Following his PhD, he worked for 2 years in the US industry. His work was related to the design of industrial burners. He was awarded the prestigious Fulbright postdoctoral fellowship in 2008. During his postdoc, he conducted research on the design of microchannel heat exchangers for industrial waste heat recovery. He joined Qasim University, Saudi Arabia in 2010. At Qasim University, he continued his research on assessment lab with the help of federal research grant. He has conducted energy audits in various industries in Saudi Arabia. He has received certification for Certified Energy Manager CEMAEE in 2016. He is a certified trainer for 4 MAT learning methodologies. He led the Faculty of Mechanical, Chemical, Industrial, Mechatronics, and Energy Engineering as Dean from 2018 to 2021. He has worked as Professor of Mechanical Engineering at the University of Engineering and Technology, Peshawar, Pakistan. He also served as the Director of the Center of Industrial and Building Energy Audits, CIBEA, and has conducted numerous industrial energy audits across Pakistan. Professor Irfan has recently retired as of May 28, 2022 from UET Peshawar. So I request, give a warm welcome to Professor Dr. Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala Rasul Kareem. Honorable Dr. Abid Sahib, Dr. Ehsan Munir Sahib, thank you for the kind introduction. Honorable faculty members of ComSats, Assalamu alaikum. So today I'm not here to teach anything to, mashallah, very good teachers like you, but the idea is to create some new ideas and start a new debate. And by the end of today's session of 60 minutes, if I'm able to raise more questions than answers, then I think that then this lecture would be a success. So I'm a certified trainer of this learning methodology format. It's actually a 5-day course, which I took in Saudi Arabia. But today we have to try to condense the course material into 60 minutes, followed by question answers. And I'm not the creator of this course. The creator of the course is Michael McMarthy, and my teacher was Robert Schmidt, educational the doctorate in education. And what is this field? Hopefully, by the end of this lecture, we'll be able to understand more. Right, so today we'll break this lecture into 3 parts. First will be about learning styles. There has been a lot of talk about teaching styles, but nowadays there is more focus on student. So how does the student learn, right? And even the psychology of learning, the biology of learning, we'll try to talk about it. Then we'll take a 5-minute break, question answer. Anything new that you have learned, I would like to hear from you, or any new question that you may have, I would like to hear from you. We'll just 5 minutes, detailed question answer will be in the end. Part 2, we'll talk about working with both sides of the brain. Those of you who are from the biology background, they know it better. And there's a very interesting video to understand how both sides of the brain work by Dr. Jill Bolt-Taylor. So you'll enjoy the video, and I think just like students, we also like videos more than talks. And I'm pretty sure that by the end of this lecture, you'll remember the video, but you might forget my talk. Then we'll go to question answer. Okay, this is, I think this slide you have seen, most of you must have seen, but this is the tragedy of our education system. So we know the tragedy, but we don't know how to address it, right? So simply, our students have different learning capabilities, but we teach them the same manner. The exam is also the same, right? Some of them fare well, some of them fare not. So is it a good assessment of their learning capabilities? What can we do with Pakistan Engineering Council on our head and HEC on our head? How can we still, in remaining in this system, how can we encourage it? So I've practiced what I'm going to teach today. I've practiced 4 years in Saudi Arabia. It works.
Then at UET, every single teacher was trained on this course. So every single teacher, Bannu campus, Aptabad campus, they are using this methodology. So you can use it in classroom. It's not theoretical. So basically, that's all we want as teachers, that what can we do to improve student learning for weak students? The good students learn anyway, but what can we do for the weak students? Are the weak students really weak, or they have a different learning style? Hopefully today's talk will be able to address these questions, right? So first of all, how do we process information? Different people process it differently. Some people like to work on it. They want some action. They'll make something and then try to understand. Like the Wright brothers, they did not study aerodynamics or aeronautical engineering. They made something and then they tried to understand what they did. While many others are like us, we try to reflect, think, do deep thinking inside and then go to action. So there are different learning styles. So in general, again, instead of words, we tend to recommend pictures. So if you go and search on Google what are the different learning styles of students, you'll find many theories. Some people say there are 6 different learning styles. Some people say there are 12 different learning styles. But this format says that there are 4 different learning styles, right? First is the student who are the social people, right? They like to talk. These are the students who are always talking in the class. And we say, don't talk, right? But they like to talk. They are social people. The second are like me, with a book always, right? They want to take notes and come with a book in the class, very studious type, right? That's again a different learning type. Then the type 3 are the doers, right? In classroom they are bored, but in lab they are very excited. They want to make something, give them a project and they'll be very happy, but their theory might not be as strong. And this 4th type, they are the dreamers. This is the student who is looking outside the class, outside the window. And we say, come, look in the class. Why aren't you looking in my lecture? He's the dreamer. He or she is the dreamer, right? But our education system does not encourage dreams, right? We just encourage this type, right? Come with a book in the class, come with the notes, don't talk, don't dream, right? So knowing that these are the 4 types, how can we engage them? That is what we are going to talk about today. You know it already. There's nothing new in it. But how do we engage them in the same class, in the same 1 hour that we have of the lecture time? Okay. So, I'll encourage you to take this learning type measure test. It's on the internet, right? If you type aboutlearning.com format, you can take the test and you'll learn that which type of learner you are. Before you understand your student, you must understand yourself. Right? So the better you understand yourselves, you'll be able to understand the student. But I'll take a quick test now, right? So, okay, so just reflect inward, think about yourself, that which is the best way you learn, right? While discussing with your friend, when you discuss ideas, you learn best, or in your own room, but studying deep in theory, that's how you learn best, or you learn best by experimenting until you work with your hands, or you learn best in dreaming or thinking about the future, etc., right? So by a show of hands, can you just raise hands and tell me how many are type 1 who learn by talking with friends? Okay, we have few. Okay, good, good. So none of them is correct and none of them is wrong. These are the different 4 types that God has created amongst us. Okay, how many are type 2 who like to? Okay, more hands type 2, right? So that's okay. And how many are type 3 who learn by doing? Okay, excellent, right? So, and type 4, the dreamers, the artist. Okay, these are the future Steve Jobs, Elon Musks of our country, right? So, nevertheless, in this audience, there are 4 learning types, right? And now you have realized that in your classroom, it must be the same, right? Then how come we are addressing only this type 2 learning? Right? We never encourage, yes, there are some discussion types, but now we understand that, okay, we have to engage all the 4 types. So if you take the learning management test on internet, your result might look something like this, right? So these are the 2, type 1, type 2, type 3, type 4. So in each one of us, all 4 are there, right? So it's not like you are exclusively type 1 and you don't have any type 2 in it. So in each one of us, all 4 are there, but there's a dominant learning style. Right? So for type 1, the dominant learning style is by talking. For type 2, the dominant learning style is by taking notes, studying. Type 3, the dominant is by doing, and this is the celebrating, right? So you'll understand yourself better, and once you understand yourself, you will be able to understand your student better. And somehow, through many tests, reduced,
they have seen that if you conduct this test for public health nurses, most of them are the social type who like to talk, right? So these types are also related with professions, right? For MBA majors, they are the writers, right? Most of them lie here, right? And engineering backgrounds will mostly be here and here. They'll either be writers or they'll be doers, right? And if you take to fine arts students will be here, type 4, right? They'll be the dreamers, the artists, the painters, right? So let's move on. So again, just quickly reflecting. So in your class, they are the social type who like to talk. Then they are the people who carry the books always. Even if you go in the library, you'll find them. Then these are the doers and these are the dreamers, right? Okay, so those of you who raised in 1, most probably you seek meaning in everything, right? Type 1, the social type of people. They believe in experience. They reflect on it. They learn by listening, right? These are the social type. They talk and they share. They absorb reality. And they are vitally interested in people, not in books, right? They're more interested in people, the type 1 student in your class. And their defining question is why? Okay, the type 2, they want to solve everything. They seek intellectual competence. Their brain fires when they do mathematical equations. They like expert knowledge. They reflect on theory. They learn by critiquing information and data. And they are vitally interested in concepts. So type 1, for people pasand hai isko, concepts pasand hai. And their defining question is what? Type 1 वाले why हैं कि why do I want to learn this? और type 2 जो है वो what सीखना चाहता है क्लास में. आपने उसको what सिखाना है. Type 3 learners जो हैं, right? तो उनको कोई चीज़ बनानी है. They seek productivity. They are not interested in books. They believe in the bottom line. कि आखिर करना क्या है इससे? Have natural technical skills and learns hands-on. They edit reality. And they are vitally interested in problem solving, right? और इनका how. You're telling them the what, ये पूछते हैं how do I apply it? And then come the type 4, जिसको हमारे learning system में बहुत discourage किया जाता है. The dreamers, they seek hidden possibilities. ये वो student है कि जब आप chapter 1 पढ़ा रहे हो, chapter 4 का question पूछता है. ठीक है? But उसको encourage करें, उसको कहें कि okay, हम normally उसको discourage कर देते हैं. They believe in taking risks. They have natural intuitive skills. Reach accurate conclusions sometimes without logic. Enrich reality. They are vitally interested in trying new things, right? और इनका जो defining question है, what if, right? आप कुछ बता रहे हो कहते हैं what if, ऐसा करूं तो क्या होगा? So अब class के अंदर हमने somehow we have to create this learning cycle that we start our lecture by experience, which goes much deeper. How? अभी हम बातें करेंगे इसके. Then give students time to reflect on it. ठीक है, उनको आपस में बातें करने दें कि अच्छा बताओ, डिस्कस करो, फिर जवाब दो. And then give them the lecture. इधर ये लेक्चर वालों को कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का टाइम दें. फिर उनको कोई मिनी प्रोजेक्ट दें. लेट देम डू समथिंग, राइट? और फिर उसको अगेन सेलिब्रेट करने दें. एंड में आके प्रोजेक्ट दिखाने दें, जिससे आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन करते हैं. दैट्स देयर सेलिब्रेशन. स्टूडेंट्स फील सो प्राउड इन डिस्प्लेइंग देयर वर्क. सो ये जो जितनी बातें आपको बता रहा हूँ आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट? ये नहीं कि देयर इज समथिंग न्यू इन इट. और आप शायद हमारे 50 मिनट्स में 40 मिनट्स इधर ही जाएँ लेक्चर में, मगर 2 मिनट आप उसको एक्सपीरियंस दे सकते हैं. 2 मिनट आप उसको डिस्कशन का टाइम दे सकते हैं, राइट? और हर क्लास में शायद प्रोजेक्ट ना दे सकें, हर क्लास में हम सेलिब्रेट ना कर सकें, सो शायद पूरे सेमेस्टर में एक दफ़ा ये कर सकें. सो दैट्स अप टू यू. बट नाउ यू नो दैट ऑल दीज 4 आर लर्निंग स्टाइल्स एंड यू हैव टू tickle their brain in this manner. Right. So normally about this learning methodologies, let the students start with what they already know and give them the lecture, what they want to know, and then let them experiment with it and see how they can create new possibilities. So this kind of completes the learning cycle, engages all 4 types in a single person or in different persons. So this we know that these are the defining questions for each type. We talked about it. So type 1 is looking for meaning. So give them the meaning of that. Why do they want to study this? Type 2 is looking for concepts. Give them the concepts. Type 3 is looking for skills. And type 4 is looking for adaptations. अच्छा, आप में से कोई बता सकता है learning कहाँ start हो रही है इन cycle में? Do you think learning starts here, here, here or here? Right? इधर तक तो teaching ही चल रही है. Right? Learning starts here. जब आपने उसको कुछ करने को दिया, चाहे homework दिया, घर जाके problem solving करो.
ٹھیک ہے, چاہے پروجیکٹ بنا دیا, دین اسٹوڈنٹ ٹیکس اوور. تو یو ہیو ٹو میک شیور ان دس لرننگ سائیکل آلسو دیٹ ٹیچر از آلویز ناٹ لیڈنگ, رائٹ. آفٹر سم ٹائم لیٹ دا اسٹوڈنٹ ٹیک اوور, رائٹ. تو انفارچونیٹلی ٹوڈے تھوڑا سا لیکچر اسٹائل ہے, اس کو ہم ورک شاپ اسٹائل کراتے تو آپ کو ایکسرسائزز کراتے ہیں تمام چیزیں. مے بی سم ٹائم لیٹر ویل ڈو دیٹ آلسو. سو اگین بار بار ری انفورسنگ, کیونکہ پہلے ٹائم مجھے پتا ہے ویل میں نے بھی دیکھا تھا, بہت کنفیوز تھا, رائٹ. سو اگین بار بار یہ ویل دکھاتے ہیں. ٹائپ 1 آر دا سوشل, ٹائپ 2 آر دا بک ٹائپ, اسکلز 1 اینڈ دا واٹ ایف پیپلس, رائٹ. سو ایچ ون ریکوائرز اے ڈفرنٹ ٹیچنگ ایکسپیرئنس. ادھر یو انگیج اینڈ موٹیویٹ اسٹوڈنٹ. تو ٹیچر کا تو کام ہی موٹیویٹ کرنا ہے. بفور اسٹارٹنگ اینی لیکچر سب میں فرسٹ چیز ہے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, رائٹ. اور you have to engage, you have to give them meaning. ایک میں آپ کو عجیب سا, maybe not a very good example. So I teach machine design, right? Maybe pretty boring subject. اس میں ہم brakes پڑھاتے ہیں, clutch پڑھاتے ہیں. Who wants to learn about brakes and clutches at second year engineering? ٹھیک ہے, وہ تو they want to learn about more exciting things. تو اب بریک میں آپ وہ ڈائگرام ڈالتے ہیں, پھر فورسز ڈالتے ہیں, سب کچھ بالکل ہی سو جائے گا. So normally I start my lecture with the statistics. I said last year in Pakistan 225 accidents took place, right? 45 people died in it. Among the people who died, or real statistics I pull out, 12 were children. Do you think you could have saved those lives by designing better brakes that won't fail? But student front پہ آ گیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے, this has moved you from your back seat to your front seat. یہ کرنا ہے آپ نے ہر کلاس میں. جتنا بھی بورنگ ٹائپ ہے شروع میں آپ نے انگیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور انگیج کرنے کے لیے یہ ہم آگے دیکھیں گے, ایک لیفٹ سائڈ آف دا برین ہے جو پورا انالیٹیکل میتھ اور ایکویشنز ہے, رائٹ سائڈ فیلنگ ہے. تو اسٹوڈنٹ کے آپ پہلے ہارٹ کو ٹچ کریں. ایک دفعہ آپ نے اس کے ہارٹ کو ٹچ کر لیا, اس کا مائنڈ آپ لے جا سکتے ہیں جہاں چاہیں. مگر مائنڈ کو پکڑنے کی کوشش کی تو نہ مائنڈ ہاتھ میں آئے گا, نہ ہارٹ ہاتھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. تو ہارٹ کے لیے فیلنگ, رائٹ, یہ ہے جو ہمارے انجینئرز وغیرہ ہم کبھی اس پہ نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں بس میتھ اور ایکویشن ہو. سو انگیج دا اسٹوڈنٹ, موٹیویٹ دا اسٹوڈنٹ ٹو لرن کہ یہ لیکچر میرے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, آج ہی, کل نہیں, آج ہی میں نے اس سے کیا کرنا ہے. پھر آف کورس انفارمیشن اینڈ ڈلیوری, یہ تو نارمل لیکچر ہے ہمارا, یہ ہم دیتے رہتے ہیں. اور پھر آپ کس طرح پریکٹس سیٹ اپ کریں گے, رائٹ, اور اپنی لائف میں کس طرح لے جائیں گے. اچھا, کچھ اندر چیزیں آ گئی ہیں اس کے, ٹھیک ہے, اس پہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں. سو فرسٹ کلاس میں آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. کنیکٹ کا کیا مطلب ہے, ریئل لائف سے کنیکٹ کریں. جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے, آتی نہیں دکھنا, فورسز آن بریکس, سو گئے بچے, ٹھیک ہے. پہلا کام آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو, ریئل لائف سے, اس کے ہارٹ سے کنیکٹ کرنا ہے. جب آپ نے کیبل کنیکٹ کر دی, اب نالج ٹرانسفر ہوگا. پھر اسٹوڈنٹ کو ٹائم دیں. اچھا بچوں, آپ ڈسکس کرو آپس میں کہ ہاؤ کین یو ڈیزائن بیٹر بریکس, کیا کریں گے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو. ان کو 5 منٹ باتیں کرنے دیں. ان کا باتیں کرنے کا شوق پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کلاس میں ضرور ان کو باتیں کرنے دیں ہمیشہ. تو وہ جو سوشل ٹائپ ہے انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے اٹینڈ کیا, اب وہ تیار ہیں آپ کے لیکچر کو. پھر امیج دیں. پکچرز آر ویری امپورٹنٹ, رائٹ. آج کل پاور پوائنٹ اتنی چیزیں, امیج ضرور دیں, ہر چیز کی پکچر دیں, رائٹ. اچھا, پھر یہ آپ کا لیکچر ہے تو 45 منٹ ادھر ہی بولیں. وہ ایکول ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے, 2 منٹ یہاں دیں, 2 منٹ یہاں دیں, یہاں آپ لیکچر دیں, ٹھیک ہے. پھر آپ پریکٹس دے دیا, آپ نے ہوم ورک دیا, گھر جا کے کرو. پھر کوئی منی پروجیکٹ دو, اپلائی کرو, اس کو ریئل لائف میں لگاؤ. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جو میں نے عمر میں پہلی دفعہ سیکھا, آفٹر مے بی 20 ایئرز آف مائی ٹیچنگ. پہلی دفعہ جب سعودی عربیہ میں مجھے ٹریننگ ملی تو انہوں نے کہا یہ ریفائن کرنے کا ہم اسٹوڈنٹ کو ٹائم نہیں دیتے. اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. منی پروجیکٹ دیا, اسٹوڈنٹ رپورٹ لایا, لاسٹ ڈیڈ لائن دی, ٹھیک ہے, 20 مارکس ہیں اور واٹ ایور. تو ہم نے جناب اس کو گریڈ کر کے کسی کو 10 آؤٹ آف 20 دیا, کسی کو 5 آؤٹ آف 20 دیا, اور رپورٹ اس کو دے دی. واٹ ہیز ہی لرنڈ اور واٹ ہیز شی لرنڈ, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نہیں, آپ اسے کہیں 1 ہفتے پہلے سے سبمٹ کرو, میں فری گریڈنگ کروں گا, تمہاری ساری مسٹیکس نکال کے تمہیں واپس دوں گا, نمبر نہیں لگاؤں گا. اینڈ گیو دا اسٹوڈنٹ چانس ٹو امپروو, کہ تم اس سے ٹھیک کر کے لاؤ, 100 بٹا لو, کیوں 20 میں سے 10 لے رہے ہو, 5 لے رہے ہو, ٹھیک ہے. ریفائن, ادھر اسٹوڈنٹ لرننگ ٹیکس پلیس, ناٹ بائی گریڈنگ 5 آؤٹ آف 20. اسٹوڈنٹس ڈونٹ لرن دیٹ وے, رائٹ. تو اس پہ ٹیچر پہ بہت زور آتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ 2 دفعہ گریڈنگ کرتے ہیں, رائٹ. آپ ایک دفعہ بیٹھ کے فری گریڈنگ کریں گے, ساری مسٹیکس نکالیں گے, دوسری دفعہ دوبارہ گریڈنگ کریں گے, بٹ اسٹوڈنٹ لرننگ انہانس ہو جاتی ہے, رائٹ. تو اکثر ہی جتنے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ ٹیچر ٹریننگ بتائیں, سب زور ٹیچر پہ آتا ہے, بٹ اسٹوڈنٹ کو بہت بینیفٹ پہنچتا ہے اس پہ. سو دس واز سم تھنگ نیو آئی لرنڈ, اینڈ فرام دیٹ آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ. اینڈ کہ ہر ایک فری گریڈنگ ایک سیشن دیتا تھا کہ آپ کا سب فری گریڈ کروں گا, اور آپ مسٹیک ٹھیک کریں آپ کو فل بٹا فل ملیں گے, نہیں ٹھیک کریں وہی نمبر ہیں آپ کے. اینڈ ان دا اینڈ لیٹ اسٹوڈنٹس پرفارم, ٹھیک ہے. ان کو کلاس میں آ کے پریزنٹیشن دیں, لیٹ دیم سیلیبریٹ, جہاں ٹیچر اسٹوڈنٹ بیکمز دا ٹیچر. تو یہ اب لرننگ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر لرننگ اسٹوڈنٹس ٹیکس اوور, ریئل لرننگ اسٹارٹس اوور ہیئر.
अच्छा, एक और इसके अंदर राइट लेफ्ट लिखा है, ये पार्ट 2 है. हम देखेंगे राइट साइड ऑफ द ब्रेन कब एंगेज होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कब एंगेज होता है. ये पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर है, उसके बाद हम बेहतर इसको समझेंगे. अभी इसको छोड़ देते हैं. बट इन जनरल आप इस व्हील को आप देखें, बेहतर समझते जा रहे हैं. एंड हाउ टू अप्लाई द व्हील टू योर क्लासरूम. सो नॉर्मली व्हाट वी डू इन द वर्कशॉप, हम ये ब्लैंक व्हील देते हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को. घर जाके बना लें खुद ही, एक दायरा लगाएं, उसमें 8 ये बना लें. फिर आप लेक्चर से पहले सोचें कि मैंने कनेक्ट एक्टिविटी क्या करनी है, लिख लें आज शाम को. कल मैंने कनेक्ट क्या करना है, कौन सा सेंटेंस कहना है मैंने जिससे स्टूडेंट का हार्ट कनेक्ट हो जाए. ठीक है. फिर आप सोचें अटेंड एक्टिविटी मैंने क्या करनी है. ठीक है. तो ये आपकी प्लानिंग है. सॉरी, कितने 2 स्लाइड जंप हो गए. राइट. तो दिस इज़ योर प्रैक्टिस व्हील. फिर आप देखें लेक्चर मैंने क्या देना है, होमवर्क क्या देना है, मिनी प्रोजेक्ट क्या देना है, यहाँ क्या करना है. ये आपकी एक्टिविटी शीट है. आप प्लान कर सकते हैं कि मैं फॉर्मेट को किस तरह यूज़ करूँ अपने लेक्चर के अंदर. अच्छा, पेनफुल लर्निंग एनवायरमेंट्स. ठीक है, हमारे साथ भी होता है, शायद अभी भी आप लोगों के साथ हो रहा हो. फॉर दैट कसूर मुझ पे ही जाएगा, टीचर पे जाएगा. व्हाट इज़ पेनफुल लर्निंग एनवायरमेंट? इफ़ यू आर वन वो सोशल बंदा है, वो बातें करना चाहता है. अनइनवाइटिंग एटमॉस्फियर, इनसेंसिटिव टीचर. ठीक है. इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, लेक्चर स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, कोई कनेक्ट नहीं है. तो आपका जो टाइप 1 है इंतहाई बोर हो गया, उसके लिए पेनफुल, वो 1-2 घंटे की सजा है उसको, डेथ बाय पावर पॉइंट है. राइट. तो बट ये लेक्चर स्लाइड छोड़ जाऊंगा तो बस आपने ये पढ़ना है कि यार ये तो मेरा एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे स्टूडेंट के साथ मैं ये तो नहीं कर रहा है, कर रही. इफ़ यू आर ए टाइप 2, ये वो बुक्स वाला है. ठीक है. तो नो गोल और पर्पस. राइट. एक्सप्लेन बिफोर. अच्छा, मीटिंग भी है और टीचिंग का भी है. लैक ऑफ सीक्वेंस, लैक ऑफ प्रिसेशन इन वर्ड्स. ठीक है. तो ये टाइप 2 लर्नर जो है इसमें बोर होने लगता है. अच्छा, टाइप 3 जो है रीडिंग से बड़ा बोर होता है, रट्टे लगाने से बड़ा बोर होता है. ठीक है. इनएडिकेट, आउटडेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट, सब वो यूट्यूब वीडियो से सीख रहा होता है. हमारा लेक्चर उससे बहुत बोर लगता है. राइट. डिस्कशन ग्रुप्स, इमोशन लेड इन कमिटिंग, इसको जो टाइप 1 वाले इमोशन नहीं पसंद, ये वो डूअर है. राइट. टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स भी इसको अच्छा नहीं लगता. राइट. ये बिल्कुल कहता है बस मुझे बताओ, नट बोल्ट कसू में. राइट. सो दिस इज द, इसके लिए ये पेनफुल लर्निंग एनवायरनमेंट है. और टाइप 4 जो है, राइट, ये ड्रीमर है. लॉन्ग लेक्चर विदाउट विजुअल्स. राइट. इसको तस्वीरें चाहिए, ड्रीम्स दिखाएं, और उसको अपने ड्रीम नहीं एनकरेज किया, ये बोर हो जाएगा. राइट. नेवर गेटिंग टू द बिग आइडिया. फॉर्मेलिटी, रिजिडिटी तो इसको पसंद ही नहीं है. बाकी चीज़ें मैं ओवर रीड नहीं करना चाहता, आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएंगे, आप पढ़ लेंगे. राइट. सो दिस इज हाउ द लर्निंग साइकिल वर्क्स. फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग टू लिसनिंग एंड शेयरिंग. इधर एक्सपीरियंस क्रिएट करें, ब्रेक, एक्सीडेंट्स, डेथ का बताएं. ठीक है. फिर लिसनिंग करें, उनको बातें करने दें, शेयर करने दें उनको. फिर इमेज दिखाएं, जो पिक्चर उनके जहन में याद रह जाए. राइट. फिर उनको एग्जामिन द आइडियाज़ करने दें. लेट देम प्रैक्टिस. राइट. लेट देम प्लान. टू क्रिटिक एंड पॉलिश, ये बहुत ज़रूरी है. रिफाइन. राइट. उसको क्रिटिक करें. और फिर ऑफकोर्स अडेप्टिंग एंड ट्रांसफरिंग इन टू वंस लाइफ. लेट दैट पर्सन परफॉर्म. तो ये व्हील आपको आहिस्ता आहिस्ते होपफुली क्लियर होता जा रहा है. ओके, दैट्स एंड ऑफ पार्ट 1. ओके, सो आई आस्क ऑल ऑफ यू टू टेक ए मिनट, और बेशक मोबाइल पे, कागज़ पे कोई एक नई चीज़ आपने सीखी होगी वो आप लिख लें. राइट. विल टेक 1 or 2 एनी न्यू थिंग दैट यू हैव लर्नड. राइट. और कोई एक क्वेश्चन आया होगा आपके जहन में, वो एक क्वेश्चन लिख लें. ठीक है. देन वील हियर फ्रॉम यू, ताकि सारा वक्त मैं ना बोलते रहूँ और आप बोर ना हो. टेक योर टाइम. 1-2 मिनट बाद हम पूछेंगे आपसे. एनीथिंग न्यू दैट यू हैव लर्नड, एनी न्यू क्वेश्चन दैट यू मे हैव. अच्छा जनाब, माइक आप तक आएगा या वैसी बात? जनाब प्लीज़. New. Right. Thank you. What are the dreamers? Like they think out of the box. What are all those who memorize? Who are all those who learn from one another? Or practical person. Right. So this was something that we normally observe, but it was in a systematic manner that yes, what we observe is correct, and Right. People call them some types of methods or some type Right. of students. My question is, when we started this presentation, our education system, I can see the slide. Their slide was about the assessment, how you will assess to climb a tree or anything. The problem is that if I even know that 20% of my students in my class, if I even know by name and by behavior,
that they are daydreamers or they are thinking out of the box. And 50% are those who are memorizing, and the list of 30% are those who are working practically. At the end of the semester, I am told that you have to submit a question paper with 5 or 6 questions. How I will incorporate all these assessment, how I will assess all these 4 categories. If I have to give a paper with 50-60% of the whole syllabus, so how I will assess, that is the question, how I will assess those who think out of the box on that in that 3 hours, or 50% or 60% is normally the final weightage. So that's my question, how to assess. Right. I think that's the first question that comes in any audience. That was my, इनका आंसर कर दूं फिर आपका सवाल ले लें. ठीक है, ऐसा करते हैं. Right. So from my personal experience, because I've told that I've been practicing this since 2014, I think, and with many other colleagues also. So first easiest thing is sessional marks. Start with sessional marks. You're right, the 50 final marks, we can't do anything. 25 midterm marks, we cannot do anything. The 20 sessional marks that you have, you can create activities, which will judge in a different manner. Once you get to learn that, then in midterm or final also, we can put questions which are, at least one question we can put more on the creative side. Even PC is saying problem-based learning. So maybe in 2 minutes I'll not be able to answer this question, but there are assessment exercises. In these 5 days, there is 1 full day on assessment. That how do you assess this? And how do you make the rubrics, right? So that you can go through this. You're right, without assessment, this will again be a dream. We will not be able to put into practice. But the quickest short answer I can give is that we can start with the 20% sessional marks. The other thing, if you go to About Learning site, you can register yourself and see the course plans of many teachers around the world, right? And you will find your subject and you'll be able to see how that teacher is doing. So that might be a better way to see what's going on. Short answer, but for now I think it will be okay. Please. Yes, my name is Dr. Mushtaq Bhatti. My question is that in normal we have 1 hour and 30-minute lectures, and we have to cater for different 4 types of students. How should the time be divided to satisfy all categories? Right. In just one lecture? Right. इसको पहली स्लाइड पे किस तरह आ सकते हैं? Excuse me, पहली स्लाइड ले आए प्लीज. अच्छा. अच्छा, press 1 इससे नहीं आ रहा है. Right, बिल्कुल ठीक. So, okay. So I'll talk about it. Maybe in a fine arts class, this wheel will work differently. In an MBA class, it will work differently. For engineering, which is very highly curriculum based, you have to teach that much in a semester, right? So this, for example, for 1 hour class, this will take 45 minutes. That material has to be covered. The initial connect was what I said about the car accidents, 2 minutes. Give them 5 minutes to talk, right? 5-10 minutes to talk, few minutes of image. So lecture almost stops here. The 1 hour stops here. This is homework. They go home and do. This is one mini project which we'll do over the semester, not in that lecture, right? And the grading part might take 1 week for the teacher. Perform might be the last week. But as for your question, the 1 hour lecture is this half only, right? And in that 1 hour, 40 minutes will be the type 2, unfortunately. But the answer again will be different for the different subjects. But I just give you an example. We'll take one more. In the end, question answer session है. मगर मैं 1 घंटा continuous बोलता तो आप सब सो जाते. ठीक है, तो थोड़ा सा break के लिए हम question कर रहे हैं. और we'll start with part 2. और फिर one more question और one more new thing that I've learned. Most welcome. बहुत सारे हैं. Youngsters से पूछ लें. इधर पूछ लें. जिस तरह मर्जी. Youngsters से पूछ लें. चलें. फिर आपका question we'll take in the end. I know it's very important. You have something very important to say. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स क्रिएट किए हैं या हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्लास में ये चारों टाइप्स हैं. सो आवर पर्पस इज टू क्रिएट अ टाइप 5 who has all these 4 abilities. Is this our purpose is now? Or in other words, कि अगर इसको मैं इस तरह कह लूँ कि apart from these type 4, there is also another type 5 who has the chunk of type 1, chunk of type 2, chunk of type 3 and chunk of type. So how to address that type 5? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. अभी बात करते हैं. अच्छा, तो जब टेस्ट लें ना, सपोज करें आप ये टेस्ट लें,
تو شاید آپ کو پتہ چلے میرا ٹائپ 1 ڈومیننٹ ہے, مگر آپ کے اندر ٹائپ 2 بھی ہے, آپ کے اندر ٹائپ 3 بھی ہے, آپ کے اندر ٹائپ 4 بھی ہے. تو میں کہوں گا ٹائپ 5 نہیں, ایکچولی یہ چاروں ٹائپس ہر ایک کے اندر ہیں, کوئی ایک ٹائپ ڈومیننٹ ہے. سو واٹ از دا پرپز؟ 2 پرپز. ایک تو آپ کو جو کریکولم دیا ہے وہ پورا کرنا ہے, بٹ ان ون لائن ٹو امپروو اسٹوڈنٹ لرننگ. چاہے آپ آرٹس پڑھا رہے ہوں, اسلامیات پڑھا رہے ہوں, انجینئرنگ پڑھا رہے ہوں, اسٹوڈنٹ لرننگ امپروو ہو. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف ٹائپ 2 کو پڑھائیں گے تو یہ باقی تینوں سو رہے ہوں گے. تو ایک ہم نیا ٹائپ نہیں کریٹ کر رہے, جس کا جو ٹائپ ہے اسی میں اس کو آگے لے جاؤ, اسی میں انکریج کرو. وہ اس کی چاہے بچپن سے تخلیق ہوئی ہے, خدا کی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, ماحول ہے, بٹ جو اس کی انر ایبلٹی ہے اسی میں اس کو آگے لے جائیں. Almost okay? Okay, we'll start with, hold your questions. I know many good questions are going to come. So we'll start with part 2. اور اس کو ہم اسکیپ کر لیتے ہیں پارٹ 2. ہاں نہیں, پارٹ 2 ہے, پھر بیچ میں ویڈیو آئے گا, 4 سلائڈ کے بعد ویڈیو آئے گا. ٹھیک ہے, ہاں سیکنڈ. تو ابھی آپ نے اوور آل آپ نے جو دیکھا ہے کہ بس ہم نے کیا سیکھا ہے ان 3 منٹس میں, دے آر 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف لرنرس. ابھی تک ہمارے خیال تھا ایک ہی ہے, رائٹ. اور ہم نے عمل کیا کرنا ہے, ان چاروں کو ہم نے انگیج کرنا ہے, رائٹ. تو یور ٹیک ہوم میسیج یہ ہے, جب آپ جائیں گے تو آپ نے سوچنا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی انگیج آل 4. اچھا, اب تھوڑا سا بیولوجی اور نیورو سائنس کی طرف آتے ہیں. آئی ایم این انجینئر, نو ایکسپرٹ, مگر برین کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے لرننگ کے وقت, اگر ہم تھوڑا سا بھی جان لیں تو شاید ہم اس کو میکسیمائز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو رائٹ, ہاؤ ڈز نیورو سائنس ریسرچ اپلائی ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ. تو اکثر ہم یہ چیز اسکپ کر جاتے ہیں. تو ایک بہت سی لرننگ تھیوریز ہیں, بٹ برین کی طرف دیکھیں تو دیر از اے لیفٹ سائڈ وچ از وربل انالیٹیکل فنکشنس. ٹھیک ہے, اور رائٹ سائڈ ہے وہ نان وربل ہے, ویزیو اسپیشل ہے, ہولسٹک ہے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم زیادہ تر ادھر سے ہی ہے. انگلش لینگویج بھی پڑھا رہے ہیں تو وربل ہے, میتھ پڑھا رہے ہیں تو انالیٹیکل ہے, انجینئرنگ بس لیفٹ سائڈ ہی ہم اسٹوڈنٹ کا, یہ رائٹ سائڈ تو ہم ٹچلیٹ کرتے ہی نہیں ہیں, رائٹ. تو سوری ٹو سے وی آر گریجویٹنگ ہاف برین گریجویٹس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے پورے 2 حصے دے کے دیا, مگر ہم اس کو اس طرح یوز نہیں کر رہے. تو لیٹس لرن ٹوڈے کہ ہم نے یہ رائٹ سائڈ جس کو ہم ابھی تک ٹچ نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم کس طرح لائیں تاکہ ہمارا گریجویٹ جو ہے وہ ہول برین لرننگ لے کے نکلے. اچھا, تو جس طرح یہ ٹیسٹ بھی آپ انٹرنیٹ پہ لیں, رائٹ. تو اٹ از کال ہیمسفیریٹی ٹیسٹ, HMI ٹیسٹ, اباؤٹ لرننگ کی ویب سائٹ پہ مل جاتا ہے. اور اس میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کا لیفٹ سائڈ آف دا برین زیادہ ایکٹیو ہے یا رائٹ سائڈ زیادہ ایکٹیو ہے, لیفٹ اور رائٹ بیلنس میں ہے. تو یہ جب ہم کلاس میں شاپ کراتے ہیں تو دین وی میک دا پارٹیسپینٹ اسٹینڈ ان دس یو. ٹھیک ہے, ابھی سپوز کریں آپ کا ٹیسٹ لوں اور جو ہائیسٹ لیفٹ سائڈ پہ اسٹور کرتا ہے اس کو میں کہوں یہاں کھڑے ہو جاؤ, جو 56 اسکور ہوگا یہاں کھڑے ہو جائے گا, 0 اسکور یہاں کھڑے ہو جائے گا, اور جو رائٹ سائڈ والے برین کے ہوں گے پلس سے ادھر کھڑے ہوں گے. تو آپ اسی کلاس میں ایک یو دیکھیں گے. اچھا, واٹ آئی ہیو سین when I teach this to engineering classes, سارے ادھر ہیں, رائٹ. ٹیچرس رائٹ ادھر ہیں, رائٹ سائڈ والا مشکل سے کوئی ملتا ہے. اچھا, اگر آپ آرٹس اور اس سائڈ پہ جائیں سارے ادھر ہیں. اچھا, میل فیمیل میں سپریٹ دیکھیں, ادھر زیادہ تر فیمیلز ہوں گی, رائٹ. تو مکس کلاس رومس جب میں نے دیکھیں تو ان کا کریٹیو مائنڈ اور ادھر ہے, ادھر انالیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے. سو دیر آر ڈفرینسز, ہماری کلاس کے اندر بھی یہ ڈفرینسز ہیں. کسی کا لیفٹ سائڈ ایکٹیو ہے, رائٹ سائڈ ایکٹیو ہے, دے آر میل اسٹوڈنٹس, دے آر فیمیل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, تو ان سب کو اب ہم کس طرح آگے لے کے چلیں اس پہ دیکھتے ہیں. سو دا لیفٹ موڈ آپریٹس وتھ انالیسس, یوزز لینگویج, ایبسٹریکٹ ایکسپیرینس, ہیز نمبر سینس, از سیکوینشل. دیٹس اس, رائٹ, موسٹ آف اس جو کہ سائنسز کے گریجویٹ ہیں. رائٹ سائڈ آپریٹس آؤٹ آف بینگ, رائٹ. وہ ایک ٹوٹل ہے, کمپریہینڈس امیجز, سیکس پیٹرنز, کریٹس میٹافورس, رائٹ, از سائملٹینیس. اس میں سب سے چیزیں مجھ میں لکھیں گے, مجھے پتہ ہے, بٹ دیٹس فار دا رائٹ سائڈ آف دا برین از. اچھا, اور یہ کوئی پہلی تھیوری نہیں ہے, مرسیڈیز کا ایڈ ہے, مرسیڈیز ایڈ اپنا حصہ دیتا ہے. تو دنیا میں بہت کامن ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ لیفٹ سائڈ آف دا برین اور رائٹ سائڈ آف برین کس طرح جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا, اور مجھے خطرہ ہے کہ آج سے 1 ہفتے بعد جب میں چلا جاؤں گا, 1 ہفتے بعد آپ نے میری ساری سلائڈز آپ سے بھولی ہوں گی, مگر مجھے یہ پتہ ہے آپ کو یہ ویڈیو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, سو دیٹس واٹ ہیپنس کہ اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں ان کو یاد رہتا ہے, لیکچر تو بھول ہی جاتا ہے, رائٹ. تو انجوائے دا ویڈیو, اس میں ایک بڑا پاورفل میسیج ہے. اور یہ جو لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کا برین ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے گی, رائٹ. کہ رائٹ سائڈ تو ایک نیورو سائنٹسٹ ہے, اس کا لیفٹ سائڈ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اینڈ دین شی ایکسپلینس کہ اس کے رائٹ سائڈ جب صرف رائٹ سائڈ کام کر رہا تھا تو واٹ شی فیلٹ, رائٹ. اور چونکہ خود سائنٹسٹ تھی تو بڑے سائنٹیفک مینر میں وہ بتا سکتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ایک شٹ ڈاؤن کر دیں تو واٹ از دا رائٹ سائڈ,
या राइट साइड शट डाउन कर दें तो व्हाट इज़ द लेफ्ट साइड, और फिर इसके बाद हम बातें करेंगे कि स्टूडेंट के हमने ये दोनों साइड किस तरह एंगेज करने. राइट, सो एन्जॉय द वीडियो. मैं भी उधर ही I grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder, schizophrenia. And as a sister and later as a scientist, I wanted to understand why is it that I can take my dreams, I can connect them to my reality, and I can make my dreams come true. What is it about my brother's brain and his schizophrenia that he cannot connect his dreams to a common and shared reality, so they instead become delusion? So I dedicated my career to research into the severe mental illnesses, and I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Bennis in the Harvard Department of Psychiatry. And in the lab, we were asking the question, what are the biological differences between the brains of individuals who would be diagnosed as normal control as compared with the brains of individuals diagnosed with schizophrenia, schizoaffective, or bipolar disorder? So we were essentially mapping the microcircuitry of the brain, which cells are communicating with which cells, with which chemicals, and then in what quantities of those chemicals. So there was a lot of meaning in my life because I was performing this type of research during the day, but then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the hemorrhage, I could not walk, talk, read, write, or recall any of my life. I essentially became an infant in a woman's body. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Yes. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Excuse me. Thank you. It's been a joy. Our right human hemisphere is all about this present moment. It's all about right here, right now. Our right hemisphere, it thinks in pictures, and it learns kinesthetically through the movement of our bodies. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems, and then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what this present moment smells like and tastes like, what it feels like, and what it sounds like. I am an energy being connected to the energy all around me through the consciousness of my right hemisphere. We are energy beings connected to one another through the consciousness of our right hemispheres as one human family. And right here, right now, we are brothers and sisters on this planet, here to make the world a better place. And in this moment,
we are perfect, we are whole, and we are beautiful. My left hemisphere, our left hemisphere, is a very different place. Our left hemisphere thinks linearly and methodically. Our left hemisphere is all about the past, and it's all about the future. Our left hemisphere is designed to take that enormous collage of the present moment and start picking out details, and more details about those details. It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities. And our left hemisphere thinks in language. It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world. It's that little voice that says to me, hey, you got to remember to pick up bananas on your way home. I need them in the morning. It's that calculating intelligence that reminds me when I have to do my laundry. But perhaps most important, it's that little voice that says to me, I am. I am. And as soon as my left hemisphere says to me, I am, I become separate. I become a single, solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you. And this is a portion of my brain that I lost on the morning of my stroke. On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me, and then it released me. And then it just gripped me, and then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of pain, so I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my cardio glider, which is a full body, full exercise machine. And I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar. And I looked down at my body, and I thought, whoa, I'm a weird-looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. And it was all very peculiar, and my headache was just getting worse, so I get off the machine, and I'm walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perception, so I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you got to contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall. And I looked down at my arm, and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button. Total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. And then all of a sudden, my left hemisphere comes back online, and it says to me, hey, we got a problem, we got to get some help. And I'm going, oh, I got a problem. So it's like, okay, I got a problem. But then I immediately drifted right back out into the consciousness, and I affectionately refer to this space as La La Land. But it was beautiful there. Imagine what it would be like to be totally disconnected from your brain chatter that connects you to the external world. So here I am in this space, and my job and any stress related to my job, it was gone. And I felt lighter in my body.
And imagine all of the relationships in the external world and any stressors related to any of those, they were gone. And I felt this sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage. Oh, I felt euphoria. Euphoria. It was beautiful there. And then again, my left hemisphere comes online and it says, hey, you've got to pay attention. We've got to get help. And I'm thinking, I got to get help. I got to focus. So I get out of the shower and I'm mechanically dressed and I'm walking around my apartment and I'm thinking, I got to get to work. I got to get to work. Can I drive? Can I drive? And in that moment, my right arm went totally paralyzed by my side. Then I realized, oh my gosh, I'm having a stroke. I'm having a stroke. And then the next thing my brain says to me is, wow, this is so cool. This is so cool. How many brain scientists have the opportunity to study their own brain from the inside out? And then it crosses my mind, but I'm a very busy woman. I don't have time for a stroke. It's like, okay, I can't stop the stroke from happening, so I'll do this for a week or two, and then I'll get back to my routine. Okay, so I got to call help. I got to call work. I couldn't remember the number at work. So I remembered in my office I had a business card with my number on it. So I go into my business room, and I pull out a 3-inch stack of business cards. And I'm looking at the card on top. And even though I could see clearly in my mind's eye what my business card looked like, I couldn't tell if this was my card or not, because all I could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell. And then I would wait for what I call a wave of clarity. And in that moment, I would be able to reattach to normal reality. And I could tell, that's not the card, that's not the card, that's not the card. It took me 45 minutes to get 1 inch down inside of that stack of cards. In the meantime, for 45 minutes, the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere. I do not understand numbers. I do not understand a telephone, but it's the only plan I have. So I take the phone pad and I put it right here. I take the business card, I put it right here, and I'm matching the shape of the squiggles on the card to the shape of the squiggles on the phone pad. But then I would drift back out into la la land and not remember if when I come back if I'd already dialed those numbers. So I had to wield my paralyzed arm like a stump and cover the numbers as I went along and push them so that as I would come back to normal reality, I'd be able to tell, yes, I've already dialed that number. Eventually, the whole number gets dialed, and I'm listening to the phone, and my colleague picks up the phone, and he says to me, and I think to myself, oh my gosh, he sounds like a golden retriever. And so I say to him, clear in my mind, I say to him, this is Jill, I need help. And what comes out of my voice is, and I think, oh my gosh, I sound like a golden retriever. So I didn't know that I couldn't speak or understand language until I tried. So he recognizes that I need help, and he gets me help. And a little while later, I'm riding in an ambulance from one hospital across Boston to Mass General Hospital. And I curl up into a little fetal ball. And just like a balloon, with the last bit of air just right out of the balloon, I just felt my energy lift and I felt my spirit surrender. And in that moment, I knew that I was no longer the choreographer of my life. And either the doctors rescue my body and give me a second chance at life, or this was perhaps my moment of transition. When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive. When I felt my spirit surrender, I said goodbye to my life, and my mind was now suspended between two very opposite planes of reality. Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain. Light burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape. Because I could not identify the position of my body in space,
I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle. And my spirit soared free like a great whale gliding through a sea of silent euphoria. Nirvana. I found nirvana. And I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found nirvana. And if I have found nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find nirvana. And I pictured a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be. What a stroke of insight this could be to how we live our lives. And it motivated me to recover. 2.5 weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the size of a golf ball that was pushing on my language centers. Here I am with my mama, who's a true angel in my life. It took me 8 years to completely recover. वीडियो भी इधर ही आप लोग देख लेंगे, बट बेसिक दिखाने का इसका मकसद ये था कि आपको बहुत क्लियर हो गया कि जब लेफ्ट साइड शट डाउन हो जाए व्हाट इज़ राइट एंड हाउ कैन वी नाउ लेट्स कम बैक ऑन द हेमिस्फीरिटी. मूवी राइट ब्रेन थी या लेफ्ट ब्रेन थी? It touched more on emotions than on logic, I think, right? Okay. So, right. So that is, YouTube में भी मिल जाएगा आपको, Dr. Jill Bolt Taylor's TED Talk, right? So ये मैं अक्सर अपने टीचर्स से पूछता हूँ कि do we engineers or scientists need to teach the right brain at all? ये left side आपका पूरा organized है, right side is enormous, total picture, right? So I think yes, otherwise it's an awful lot waste of space. ठीक है, इतना ताला अल्लाह ताला ने 2 साइड्स दे के भेजे हुए हैं और हम सिर्फ आधे साइड को पढ़ाते हैं. सो अब लेट्स ट्राई टू कम टुवर्ड्स द आंसर्स. उससे पहले मैं आपका क्विक क्विज लेता हूँ. ठीक है, तो ये आप पिक्चर्स देखें. इसमें मैं एक पिक्चर बदलूँगा और आपने बताना है कि वो कौन सी पिक्चर जो है बदली है. ठीक है, और क्विज में ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे. विच पिक्चर? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ठीक है, अगर मैंने वर्ड्स दिए होते नो वे आप बता सकते. ठीक है, तो एक क्विक एक्सरसाइज से पता चला कि पिक्चर्स हम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? तो हमारे लेक्चर्स के अंदर भी अब तो पावर पॉइंट हुआ रहा है, वी शुड ट्राई टू बिल्ड मोर पिक्चर्स. वो ज़्यादा डीप जाता है, डीप इमेज जाता है, राइट? सो अगेन हाउ बैलेंस, अभी आपके लिए अपने क्वेश्चन है कि डूइंग और बीइंग के दरम्यान हमारा बैलेंस है, कॉग्निशन इंट्यूशन में बैलेंस है, कितना बैलेंस है, राइट? एंड ऑल पीपल हैव इंटेलिजेंस. वी हैव आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन, हाउ मच. वी नीड टू आस्क व्हाट काइंड. ठीक है, वो 4 डिफरेंट टाइप्स थे, हम सिर्फ टाइप 2 की इंटेलिजेंस नाप रहे हैं. ठीक है, सो अच्छा, जिस तरह स्टूडेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, टीचर्स भी डिफरेंट्स हैं. टाइप 1 टीचर का माहौल किस तरह होता है? ये वो सोशल टीचर है, वार्म, केयरिंग, पर्सनल परसेप्शन, डिस्कशन बेस्ड क्लासेस होती हैं. जो टाइप 2 टीचर है, बिजनेस लाइक, सीधा नोट्स. टाइप 3 टीचर ये डूअर है, ये आपके क्लास में प्रोजेक्ट्स करा रहा होता है. ठीक है, और टाइप 4 क्या है? स्पॉन्टेनियस, राइट, मोर टुवर्ड्स क्रिएटिविटी. तो टीचर्स भी इसी तरह 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, राइट? तो टाइप 1 टीचर्स की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ग्रुप डायनामिक्स, राइट, ये डिस्कशन वाले हैं. टाइप 2 टीचर्स की एक्टिविटी क्या है? सिर्फ लेक्चर. टाइप 3 की एक्टिविटी क्या है? प्रोग्राम प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, राइट? अच्छा, सो अब राइट एंड लेफ्ट भी आप समझ गए हैं. दोबारा इस व्हील को देखते हैं, राइट? और अब इसके एक स्टेप और में जाते हैं. जब आपने कनेक्ट किया, आज जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे ब्रेक्स का, उसको इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया. विच साइड ऑफ द ब्रेन डिड यू टिटिलेट? राइट साइड. ठीक है ना, उसमें कोई नॉलेज नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं था, आपने इमोशन को टच किया. फिर आपने उनको बातें करने दी, राइट? वो बातें कर रहे हैं, वर्ब है, लैंग्वेज है, लेफ्ट साइड. देखिए, फिर आपने उनको एक पिक्चर दिखाई, जिससे ये मूवी थी या कोई और इमेज है, कौन सा साइड टिटिलेट किया? राइट. फिर आपका लेक्चर है 45 मिनट्स का, लेफ्ट साइड. ठीक है, प्रैक्टिस होमवर्क दिया, लेफ्ट साइड.
राइट साइड क्रिएटिविटी दिया, जाओ कोई मिनी प्रोजेक्ट करो, कोई चीज़ बनाओ, फिर रिफाइन किया, आके सब चीज़ें करेक्ट की, और एंड में तो आप देखें कॉन्स्टेंटली अगर आप उसके क्लासरूम में राइट लेफ्ट स्विच करेंगे, पूरा ब्रेन फ्राई होकर क्लास से बाहर निकलेगा स्टूडेंट, राइट. ही विल फील होल ब्रेन लर्निंग. वो एक प्लेजर ही अलग होता है मूवी का, जब आप नोटिस करें कि मेरे दोनों साइड जो हैं ब्रेन टिटिलेट हुए हैं, राइट. सो डिस्कशन मेथड है टाइप 1 के लिए, राइट. टाइप 2 के लिए इज टीचर एक्टिंग, राइट, मोर ऑफ इंफॉर्मेशन मेथड है, राइट. टाइप 3 टीचर बिकम्स द फैसिलिटेटर, राइट, और इधर लर्निंग टेक्स ओवर. और टाइप 4 के लिए आपकी इवैल्यूएशन है, रेमीडिंग है, सो काइंड ऑफ कंप्लीट्स द साइकिल. तो इन चारों टाइप्स के लर्निंग के लिए थोड़े से व्हाट यू आर डूइंग इज़ डिफरेंट. टाइप 1 डिस्कशन में एंगेज होता है, इंफॉर्मेशन में, कोचिंग में, सेल्फ डिस्कवरी. अगेन हमारे इधर ही हम ज़्यादा फंसे होते हैं, मगर इनको टच कर लें. मुझे पता है करिकुलम है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, बहुत सी चीज़ें, राइट. सो अगेन विल गो थ्रू कि आपने अपना लेसन प्लान अभी घर जाके कैसा डिज़ाइन करना है, ये व्हील लेना है आपने, इसमें आर्ट आपने खाने बनाने, और जाके सोचना है कि कनेक्ट एक्टिविटी क्या होगी. मैंने क्लास का लेक्चर किस तरह स्टार्ट करना है, हाउ डू आई कनेक्ट द राइट साइड, ठीक है. फिर आप देखें अटेंड में क्या दूं स्टूडेंट को कि वो आपस में बातें करे और डिस्कशन दे, क्या टॉपिक दूं अटेंड का. फिर थर्ड सोचें कि नॉन वर्बल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ये राइट साइड को बातें नहीं हो, बातें हों तो फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है. तो आप क्या कॉन्सेप्ट देंगे, और फिर अगेन लेफ्ट साइड, राइट. देन प्रैक्टिस के लिए आप सोचें होमवर्क क्या देना है, फिर मिनी प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, आप रिफाइन एक्टिविटी क्या देंगे जिसमें आप ग्रेड करें और हेल्प करें, और एंड में परफॉर्म एक्टिविटी स्टूडेंट के लिए क्या होगी. सो दिस काइंड ऑफ कंप्लीट्स द लर्निंग साइकिल विच इसके अंदर जो पहला आपका पार्ट 1 था कि दे आर 4 डिफरेंट लर्निंग टाइप्स, वो भी हम कवर कर रहे हैं, और जो पार्ट 2 था कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, वो भी हम कवर कर रहे हैं, राइट. सो मेनी ऑफ दीज यू आर यूजिंग. मुझे पता है कि आज आपने, जिससे आपने कहा कोई नई चीज़ हमने नहीं सीखी, आप में से अक्सर टीचर्स ये मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, बट आज आपको एक कम से कम मेथड मिल गया, एक व्हील मिल गया जिसमें आप इसको फॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. सो आप लोगों को एक वॉलंटियर एक्टिविटी करने कहूँगा, प्रैक्टिस इट इन नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स कंपेयर करें आपके पिछले सेमेस्टर के साथ, ठीक है, और 4-5 टीचर मिल के करें, उस पर पेपर लिखें, ठीक है. आपकी एक पब्लिकेशन आ जाएगी कि फॉर्मेट टीचिंग डज इट इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, एवरेज क्लास GPA बेहतर आया है, उनकी लर्निंग बेहतर हुई है, ठीक है, और एक मेजरमेंट भी हो जाएगी. सो आई विद दिस वॉलंटरी एक्टिविटी, और फिर शेयर करें, अपने जूनियर्स को सिखाएं जो आज नहीं थे कि आप फॉर्मेट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. सो अगेन आई रिक्वेस्ट फॉर, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, यस. सो आई रिक्वेस्ट फॉर 2 minutes आप लें एंड राइट डाउन वन थिंग न्यू दैट यू हैव लर्नड इन पार्ट 2, and any question that you may have, and then general questions आपके जब तक 1 बजे का lecture time नहीं हो जाता. So take a minute and anything new that you have learned, new question that you may have. बिल्कुल ठीक है, माइक जाएगा, ठीक है. और 5 to 1 we'll close, फिर मैं क्लोजिंग करेंगे ताकि फिर जा सकें ना. 5 to 1 I'll close ताकि फिर आप आके सेरेमनी क्लोज कर सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर द यूज़फुल टॉक. मुझे ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा है रिफाइनमेंट का, जो हम आमतौर पे यही करते हैं कि एक हार्ड डेडलाइन होती है और उसी पे ही जज करते हैं स्टूडेंट्स को. तो ये एक अच्छा आइडिया है कि 1 आध दिन पहले उनको रिफाइनमेंट का एक टाइम, जैसे लैब का या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जमा करानी है, तो आमतौर पर उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. आखिरी दिन जब हम मिस्टेक्स बताते भी हैं तो उन्हें पता है डेडलाइन हो गई है, मार्क्स लग गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसको ठीक करने का, और वो ठीक भी नहीं करते हैं. तो अगर 1 आध दिन पहले रिफाइनमेंट वाला मेथड अपनाया जाए तो मेरा ख्याल है इससे फ़र्क बिल्कुल ठीक. पड़ेगा. आई वुड से 1 week बिफोर अपने आप को भी टाइम दें. आप ग्रेड करेंगे, वापस करेंगे, 1 दिन पहले भी नहीं, 1 week पहले रखें. ओके, थैंक यू. सर बहुत शुक्रिया, आपकी जो गुफ्तगू थी वो बहुत ज़्यादा इसमें जो नई चीज़ सीखी वो यही थी कि ये जो आपने मॉडल बताया वो किसी न किसी तौर पे हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, किसी न किसी को टच करते हैं. जो पर्सनैलिटीज़ का बताया, पर्सनैलिटीज़ में कोई एक डोमिनेंट होती है और कोई जो है ना बाकी सारे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी में किसी न किसी तरह से शामिल होते हैं. मैं ये आप लोगों आपकी गुफ्तगू सुनता रहा तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम इस मॉडल को एगमेंट कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो मेरे माइंड में एक छोटा सा एक सजेशन है या जो भी है बताएं. वो आई, और जिसको मैं अप्लाई भी करता रहा हूँ. 5 Ws और 1 H को अगर इसमें एगमेंट किया जाए तो ये और ज़्यादा शायद बेहतर हो जाए. बिल्कुल ठीक. तो ये भी है, और एक यही एक थोड़ी सी सजेशन थी. मे आर मे नॉट, आप इस पे को थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकते हैं.
थैंक यू वेरी मच. राइट. तो यस, ये इतना हार्ड एंड फास्ट मैथ नहीं है, अपने स्टाइल के मुताबिक इसको मॉडिफाई करें. ठीक है, जिस तरह ये एक साइकिल आपको बताया, ये एक क्लास में नहीं होगा, कोई एक सेमेस्टर में करेगा, कोई 1 ईयर में करेगा. राइट. सो मगर आपको टूल्स दिए हैं, अब इस टूल्स को इस्तेमाल करें. आपको एक रियलाइजेशन आ गई है. राइट. और भी सीखें. अबाउट लर्निंग पे जाके इनके कोर्सेज होते हैं, आप सब्सक्राइब करें, ईमेल्स आएंगे. ठीक है, तो यू कैन कंटिन्यू. थैंक यू फॉर योर गुड सजेशन. थैंक यू. अच्छा, नेक्स्ट कौन आप पूछेंगे? सर, मेरा क्वेश्चन है. प्लीज़, आपका भी रहता था क्वेश्चन, इसके बाद आप पूछ लें. और क्वेश्चन मेरा इस तरह है कि हमारे पास अभी अगर हम लर्निंग स्टाइल मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लर्निंग स्टाइल मॉडल्स अवेलेबल हैं. प्रॉब्ली जो मैंने स्टडी किया अराउंड 70 के करीब हमारे पास लर्निंग स्टाइल मॉडल एग्जिस्ट करते हैं. और बहुत जो कॉमन लर्निंग स्टाइल मॉडल्स हैं उनमें फेडरल सिल्वरमैन का मॉडल है, या आप ये फॉर्मेट का कह रहे हैं, या अभी हमारे पास 1984 में प्रॉब्ली थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने वो थ्योरी प्रेजेंट की है. तो अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को देखते हैं तो वो ये कहता है कि ह्यूमन मे पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस इंस्टेड ऑफ अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस. तो उसमें जो किसी पर्सन की डोमिनेट इंटेलिजेंस होती है उसको अगर उसके अकॉर्डिंगली टीच किया जाए तो वो प्रॉब्ली ज़्यादा इफेक्टिव होता है. मेरा एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में है कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, हर एक मॉडल पे डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं. तो हाउ डिड यू फाइंड कि ये फॉर्मेट इज़ बेटर देन रेस्ट ऑफ द मॉडल्स? तो इसको अगर आप काइंडली थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करें. बिल्कुल ठीक है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सो हैपेंड कि मुझे फॉर्मेट की ट्रेनिंग मिली. आई डोंट से कि ये बेहतर है. और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का थोड़ा बहुत कार्ल यंग को पढ़ा, डेविड कोल्ब को पढ़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे. सो थोड़ी बहुत स्टडी थी, मगर माशाल्लाह आपकी बहुत डीप स्टडी है और इससे बेहतर मॉडल होंगे. बट पर्पज़ आज का बिल्कुल ये था, ये कहता ही नहीं कि ये बेस्ट है, मगर सिर्फ एक शौक़ आपके अंदर उजागर करना. ठीक है, आप डिफरेंट लोगों को बोलेंगे अच्छा ये मॉडल है, लर्निंग में आप जाके स्टाइल ढूंढते हैं. मे बी पीपल विल फाइंड डिफरेंट लर्निंग मॉडल्स टू एनहांस द लर्निंग. मगर सिर्फ पहले अभी यहाँ आने से पहले डॉक्टर आबिद साहब के ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि आजकल HEC का रिसर्च पे इतना जोर है कि टीचिंग को हम भूल गए. राइट. तो एक इस तरह की ट्रेनिंग से टीचिंग दोबारा रिवाइव हो जाती है. राइट. आप में शौक़ पैदा हो जाता है टीचिंग करने का. तो दैट्स ऑल, बट इट्स नॉट द परफेक्ट लर्निंग मॉडल. थैंक यू फॉर शेयरिंग, मैंने बहुत सीखा आपसे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो सा था ना वो प्रीवियस वाली स्लाइड से था. अच्छा, तो क्वेश्चन ये था कि जी मैं एज्यूम कर रहा था अपनी क्लास से नहीं, अपने किड्स से ना, कि वो टाइप 4 से टाइप 3 की तरफ आते हैं. मैं जब भी उनको देखा है कि जी मैंने वाइफ से पूछता हूँ कि जी आज इन्होंने कौन से ना एनिमेटेड वो कार्टून्स वगैरह देखे हैं. कभी वो कह देती है कि जी अली एंड हाना वाला देखा है, कभी कहती है बियर एंड मार्शा वाला देख लिया. जब भी वो बियर एंड मार्शा वाला देखती है ना, तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो वो उसी तरह ही एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसी तरह ही जो सा है प्लेइंग कर रहे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं. और जिस टाइम अगर वो अली एंड हाना वाला देख लेते हैं तो जब से ही मैं घर जाता हूँ तो वो जनाब बड़े प्यार मोहब्बत से जनाब मुझे पेश आते हैं. ठीक है, पानी का भी पूछते हैं क्योंकि उसके अंदर इस्लामिक टच है और दूसरे के अंदर जो सा है ना वो किड्स वाली वही शरारतें वगैरह वो टच है. तो मैं वो उससे रिलेटेड था कि जी ये रिवर्स है, यानी कि जी उनको फर्स्ट 2 कार्टून से उनसे कोई गर्ज नहीं, उनको सेकंड एंड थर्ड से जो है ना वो जैसे ही कुछ चीज़ देखते हैं तो वो उसी तरह ही प्ले शुरू कर देते हैं. बिल्कुल ठीक. अंडर 5 ईयर जो से हैं वो इससे रिलेटेड था कि जी भाई ये क्यों होता है कि जी वो इन 2 कार्टून में क्यों है, इस पहले 2 में क्यों नहीं है. वो कोई नहीं हमारी बात नहीं सुनते. सही है, सही नहीं. गुड शेयरिंग. किसी किताब की दुकान के बाहर मैंने पढ़ा था यू आर वॉट यू रीड. तो इसी तरह आजकल है कि यू आर वॉट यू सी. जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं. तो आई थिंक क्वेश्चन क्लोज करें आप लोग. ओके, वील टेक मोर. डॉक्टर एहसान मुनीर साहब, ओके आप भी आ जाए, मॉडरेट कर लें. मैं हाजिर हूँ मगर मुझे पता है आप लोगों के लेक्चर टाइमिंग्स हैं, तो आप कहें प्लीज़ गो अहेड. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, बेसिकली 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के सिनेरियो में जहाँ हम देखते हैं कि डिजिटल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे बड़ा वो पैसे का एस्पेक्ट देखते हैं, यार उसने ये चैनल कर दिया, हमने ये कर दिया, तो हम ये समझते हैं कि वो टाइप 4 में लाइक कर रहे हैं ज़्यादातर. लेकिन हम ये भी पता है कि टाइप 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. नोट्स बनाना, कुछ चीज़ें सीखेंगे, ज़ाहिर है टिपिकल लेक्चरिंग. एक तो ये है कि अगर मेजॉरिटी को हम देखते हैं ना आजकल के सिनेरियो में, तो वो टाइप 4 में लाइक कर रहे हैं, वो उससे निकलने की कोशिश नहीं करते. और दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारे पर मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं तो हमें हार्ड एंड फास्ट होता है जी कि हम फाइनल, जिस तरह इमेज आपने दिखाया है इसमें एलिफेंट भी है, मंकी भी है, फिश भी है. तो उस फाइनल जो हमारे पास पेपर होते हैं, इज़ देयर एनी मैकेनिज्म कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर हमें फिर वो बर्डन लेके मल्टीपल पेपर्स बनाने चाहिए, इन सारी क्लासेस को एड्रेस किया जाए.
So this is very challenging for us. So इसको बिल्कुल kindly ठीक. address. एक तो क्लास के शुरू में आप रेज ऑफ हैंड टेस्ट तो ले ही सकते हैं, जिससे अभी मैंने लिया था, आपको अपनी क्लास का अंदाज़ा होता है. और पेपर्स बनाना बिल्कुल अलग टेक्निक है, उसके लिए अलग एक पूरी ट्रेनिंग लगेगी, असेसमेंट, रूब्रिक्स वगैरह. बट जिस तरह आपको मैंने बताया, पहले वो जो आपके 20 नंबर सेशनल वर्क है ना, उससे स्टार्ट करें. और यू लर्न बाय एक्सपेरिमेंटेशन, देयर इज नो वन टेक्निक जो कि हर सब्जेक्ट पे सेम आए. तो सिर्फ आपको एक टूल दिया है, एक्सपेरिमेंट करें, नथिंग विल गो रॉन्ग, स्टूडेंट्स विल लर्न बेटर. ठीक है. सो आई नो देयर आर मोर क्वेश्चंस, बट आप लोगों के आगे क्लास भी है और मीटिंग्स भी हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. थैंक यू. नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आबिद साहब के वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए, और बाकी कोलीग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा बैठिएगा, सर को हम शील्ड भी देंगे और एक ग्रुप फ़ोटो ले लेंगे सर के साथ, हमारी यादगार रहेगी. थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you, Professor Irfan Sahab, for coming us and enlightening with your very important topic actually. You see, training for the trainers is always important. It's a continuous process. The dynamics have changed over the last couple of years very fast. So it has really affected all the minds of the maybe trainers as well as the students as well. But the technologies and methodologies, I remember in 1997 when I went to UK first time, there was a debate what is the best methodology of teaching. So उस वक्त हम काफ़ी वो trying to be नए नए तबलीग में भी लगे थे और इस्लामिक माइंड भी था, तो वो रात को सोचते रहे यार ये कौन सा बेस्ट मेथोडोलॉजी होगा. तो वो ऐसे ही मैं सूरह कारिया पढ़ रहा था, अलकारिया ना, तो दैट अल्लाह क्लिक्ड ऑन माई माइंड दैट अल्लाह कहते हैं अलकारिया ना, टाइटल बयान करते हैं, मलकारिया, फिर ये इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, वह मादरा का मलकारिया, फिर आगे उसका जो लेक्चर शुरू होता है यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, या डिटेल आगे चलती है, फिर आगे उसमें इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा. तो दैट आई प्रिपेयर जस्ट दैट स्लाइड. मैंने कहा पता नहीं कल के हो गए समझेंगे कि ये टेररिस्ट आ गया है. उस ज़माने में हालात भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे. तो लेकिन व्हेन आई प्रेजेंटेड माय प्रेजेंटेशन आई गॉट द बेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी. एंड देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड था कि व्हाट इज़ द बेस्ट टीम एवर बिन मेड. जो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से एक हमारा एक सब्जेक्ट था तो वो पढ़ा रहे थे. तो अगेन हमने सोचा क्या, तो फिर हमने कहा कि द बेस्ट एवर टीम एनीबडी कैन मेक इज़ द प्रॉफिट मोहम्मद, कि उसने उमर जैसे, अबू बकर जैसे, उस्मान जैसे, अली जैसे जो है ना टीम बनाई कि जिसमें यंगस्टर्स भी थे, बड़े भी थे, बहुत ज़्यादा लोग थे. तो दीज आर वर बेसिक्स. तो बाकी जो डॉक्टर साहब ने कहा, थैंक यू वेरी मच. इट्स रियली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई ऐसी चीज़ मिलने को मिली, कि सीखने को मिली कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं लेकिन उनको लिंक कैसे किया जाए. बट बिलीव यू मी विद द चेंजिंग फिलासफी ऑफ मेथोडोलॉजी, जो अभी हमारी हाइब्रिड मोड में भी हम चले गए और ऑनलाइन मोड पे भी चले गए, स्टिल वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि कैसे उसको बच्चों को जो है ना, अल्टीमेट अवर गोल इज़ अवर ओन किड्स, चाहे वो घर में हैं, वही यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वही स्कूल में भी आ रहे हैं. तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फैकल्टी मेम्बर्स टू बी हेयर. लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अगले जो पार्ट 2 है उसमें भी देखते हैं कि हम कहाँ पर इसको एक्सरसाइज करें. इट्स जस्ट फॉर आवर सेल्फ, कि इसे सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखते हैं ना, दिस इज़ फॉर माई सेल्फ फर्स्ट ना, दैट हाउ आई कैन बेनिफिट माई सेल्फ एंड हाउ आई कैन बी बेनिफिशियल टू दी अदर्स. जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है. तो डॉक्टर इरफान साहब से हमारा बहुत ज़्यादा हमेशा हम सीखते हैं. आई यूज़ टू कोट वन सेंटेंस ऑफ डॉक्टर इरफान. जब मैं डीन JIK में बना तो मैंने डॉक्टर साहब पूछा कोई एडवाइस, तो जो अभी भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता ज़्यादा, कहते हैं लिसन मोर स्पीक लेस. तो दैट्स वन सेंटेंस समटाइम्स चेंज योर लाइफ व्हेन यू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन सीट्स. सो हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं. तो आई होप यू ऑल आर माशाल्लाह वेरी एजुकेटेड कम्युनिटी, और हमारा तो रोल एज ए मेंटोर वी हैव टू रीडिफाइन. मैं ये रीडिफाइन का जो वर्ड है इसको मैं कल भी कहीं पढ़ रहा था कि वी हैव टू सिट ऑन एन ईजी चेयर. मेरा एक प्रोफेसर था, आखिरी बात करते हैं. आई वेंट टू नटिंगम यूनिवर्सिटी अगेन. डॉक्टर साहब 2002 में मैं 2000 में PhD की, 2002 में मैं दोबारा UK गया. तो माई एक्सटर्नल एग्जामिनर वाज यूज्ड टू बी, आई हर्ड, मैं पहले सुनता रहा जी बड़ा सख्त एग्जामिनर है ना, तो हम पहले पाकिस्तान में डरे होते हैं, मैंने कहा इधर भी डरा दिया इन्होंने पकड़ के ना. अभी उसका वाइवा भी नहीं हुआ था. बट आई विजिटेड हिम बिफोर माई एग्ज़ाम एंड वी हैड ए डिटेल डिस्कशन सेशंस लाइक दिस. मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको बताया
and he was the head of the Rolls-Royce Research Institute at that time. تو نام بھی بڑا تھا اور پروفیسر کا سنا بھی بڑا سخت ہے. تو میں اس سے ڈسکشن ہوئی جب میں وہ جو مجھے ایئر چھوڑنے آیا ٹرین اسٹیشن پہ, تو ہی گیو می ون سنگل سینٹینس, یو ہیو اے لائف ٹائم آفر, وین ایور یو وانٹ ٹو کم یو کم اینڈ جوائن مائی لیب. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یار میں نے تو کوئی خاص بات نہیں کی اس سے, تو یہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے نا. تو میں 2 سال کے بعد پوسٹ ڈاک پہ گیا اینڈ آئی میٹ ہم اگین. اس نے مجھ سے پوچھا یار ڈاکٹر عابد وٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز. میں نے کہا جی میں اتنی ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں, اتنی ریسرچ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں. تو اس نے ایک سینٹینس کہا, اٹ مینس یو آر ڈوئنگ نتھنگ. تو میں بڑا پریشان, میں نے کہا وہ کہتے اس نے پھر مجھے ایک سینٹینس پھر کہا اس نے کہ سیٹ آن این ایزی چیئر, ہیو اے پیس آف پیپر اینڈ پینسل اینڈ اے ریزر اینڈ تھنک وٹ یو آر ڈوئنگ, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. کہ زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے ایک وقت میں نا, ملٹیپل ہم ٹاسکنگ کرتے ہیں یہاں پہ. تو یو لرن فرام دی کمیونٹی وین یو ٹاک ٹو دا پیپل, وین یو میٹ ٹو دا پیپل. نو ڈیز وی آر آئسولیٹڈ ان آور کمیونٹیز, وی آر آئسولیٹڈ فرام دا فیملیز ایون نا. اپنے بھائی بہن سے بھی ہم ذرا ڈرتے ہیں, بھاگنے جانے سے بھی کوئی آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ سوشل انٹریکشن از ریڈیوسنگ, اینڈ دیٹ سوشل انٹریکشن اسپیشلی ود دا اسٹوڈنٹس از گوئنگ ٹو بی اے ڈسکنیکٹ by the mentors actually. And mentor is a very big word. اس دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے نا mentors جو ہوتا ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اگین. اینڈ ڈاکٹر احسان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ڈاکٹر صاحب سے انٹریکٹ کیا اور آپ نے ان کو یہاں پر لے آیا. آخر بڑی دیر سے ہم 2-3 مہینے لگ گئے ہمیں. تو یو سی دی worthy words to listen, ہماری طلب ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس سے حاصل کرنا ہے. یہ از ویری امپورٹنٹ فار اس. So the words do matters. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو دکھائی, sometimes we waste our time on many things, but if we have to be objective, being جو ہم نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ استاد بننا ہے, تو we have to learn from the experiences of the different people, either from the soft media we have or either from the physical appearance. That is most important. So inshallah we'll meet again with ڈاکٹر صاحب کے لیے تالیاں ہو جائیں اور شکریہ بھی ادا ہو جائے اس کے لیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب.